तो ओके, तो अभी आज स्टार्ट करेंगे गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay, so what we are going to start today? गाइस, ETL फंक्शन पे जो टॉपिक्स रहेगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जैसे कि आपका एक मेजर टास्क असाइन आपको किया जाएगा। सर, मेजर टास्क आपको क्या किया जाएगा कि व्हाट इज योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज योर टॉपिक्स, ये आपको पूछा जाएगा कि आप किस पे इन्वॉल्वमेंट हो। समझ लो सर, इस चीज को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि डेटा साइंस में 60 to 70% आपको ऑटोमाइजेशन रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। समझ लो सर, दिस इज योर, आई थिंक हर किसी को ETL पता है, थोड़ा पता है। हेलो, सो पता है कि नहीं पता है क्या होता है ETL होता क्या है? आपने जो भी टूल कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, फर्स्ट टेक्नोलॉजी यू आर रीडिंग, सर क्या बोलते हैं इसको, सर आप डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग? So framework you have to represent, sir, is ELT, big data, ETL. सर ये चीज ही फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिटेल्स, दैट इज सिंपल योर टूल्स। टूल्स के ऊपर एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है गाइस, दैट इज एब्सोल्युटली 0.1% of the business. Focus on the technologies. This is ETL. Stick with one point. अभी ETL में सोर्स सिस्टम से डेटा आया, सर डेटा आने के बाद वेयर हाउस में लोडेड हुआ, एंड यूजर बोलेगा कि मेरे को हेलो सर आपकी आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? ब्रेक हो क्या रहा है? ब्रेक हो रहा था ओके, अभी आ रहा है। अभी ठीक है। ओके, सो दिस इज नथिंग अबाउट योर सोर्स सिस्टम। सर सोर्स सिस्टम से इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे कि एज्यूम सर यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड, सर किसका, कोई भी बैंक ले लो, बैंक ऑफ अमेरिका। सर दिस इज योर डेबिट कार्ड, दैट इज योर कार्ड ट्रांजेक्शन। मैं बोला था किस में स्प्लिट होता है सर, द फंक्शंस। दिस इज योर क्रेडिट कार्ड, दिस इज योर डेबिट कार्ड, दिस सोर्स सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम आपको प्रोजेक्ट में रखा गया तो मेक श्योर सर उसका सोर्स सिस्टम के साथ प्रिपेयर होकर रहना, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर विद इन 2 सेकंड होना चाहिए, एल्स इट विल बी कोलैप्स्ड। पूछेंगे तुम्हारा सोर्स सिस्टम क्या है, एंड इस बात पे ऐसे रेडी रहो 100%। इसी बात पे कोई भी डेवलपर का ये लोग वीक रहते हैं इस पार्ट पे, एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया करके इसी को अटैक करो। आई हैव वर्कड ऑन ETL स्टार्टिंग से गाइस, स्टार्ट करना कैसे बोलना है मैं बोल देता हूँ। डेटा साइंस में से लर्निंग कहाँ पर की यूज किया। सो फ्रेमवर्क यू हैव टू रिप्रेजेंट, सर ये हो गया आपका ETL प्रोसेस। टारगेट में जब लोड हो, टारगेट में क्या लोड होगा, दैट इज कैट ट्रांजेक्शंस। of CAD transaction data will be loaded on CAD transaction. This will be loaded on the warehouse, and the logic will be implemented here. How many people are using credit card? How many people are using debit card? How many people are using both? All this information will be, you have to analyze. That is data.
ये कंटेनर बिग डेटा हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है. द प्रोसेस इज ETL. So that means sir, ETL is the technology. And how the scenario will be there? Assume here is the first name and here, ये सब लिख के रखो गाइस, इसको समझने का कुछ मतलब ही नहीं है. लिख के रखो बैठ के. मोबाइल में क्लास करो, तुम सो के करो, कुछ मसला नहीं है, बट नोट इट डाउन. दिस इज लास्ट नेम. So this is your sort system. What customer is asking here? When both will be loaded in the warehouse, it must be customer first name plus last name at the rate bank name. Getting guys? This is what the customer requirement is. Getting or not? This report, the client is layman. This is one part, that is your ETL, the structure. This is 40% of your data science. Next comes your, वो बोलेगा कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मुझे तुम रिपोर्ट में दिखाओ. दैट रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसको बोलते हैं रिपोर्ट विजुअलाइजेशन. क्या बोलते हैं? रिपोर्ट विजुअलाइजेशन. सर यानी वो रिपोर्ट में देखना चाहता है हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग डेबिट कार्ड. दैट इज योर ग्राफ्स, चैट्स. उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस. क्या बोलते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस. आप जिसको BI रिपोर्ट बोलते हैं. दिस इज another job. Are you getting my point? लो. So अब सर हमारा कोड इन्वॉल्वमेंट कहां पर है? कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ. आ रहा है ना? आप आज तक शायद ये सुने होंगे सर हमने टैब्ल्यू की. टैब्ल्यू कहां पर यहाँ यूज होता है बताओ? ये टैब्ल्यू एरिया है. ये टैब्ल्यू एरिया है. बिजनेस इंटेलिजेंस इज द रियल वर्ड. ये वर्ड गलत ही है पहले बात. ये टूल है. दिस इज टेक्नोलॉजी. बोलने का सर आई हैव इन्वॉल्व इन बिजनेस इंटेलिजेंस. सर ये किस पे इंफॉर्मेशन होता है? दिस डेटा will be represented in terms of charts, bar graph, pie chart, whatever it may be. That is BI. इसको बोलते हैं ETL. एक concept clear हो पहले. ओके सर हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है और हम किस तरीका से काम अंदर में जाके करेंगे? मशीन लर्निंग कहाँ पर यूज करते हो, कैसे यूज करते हैं? ओके गाइस, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे. You will get the clear picture about it. अज्यूम करो सर दिस पार्ट को कवर करेंगे सर. चलो गाइस, सर दिस इज योर ETL. यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? एक छोटा सा रिक्वायरमेंट लेंगे. और ऐसे भी कभी कभी होता है. ये समझ लो सब्सक्राइबर नेम है. सब्सक्राइबर नेम इज सर, समझ लो वोडाफोन. एंड सब्सक्राइबर ID 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर जब डिस्प्ले होगा इट मस्ट बी दिस. और यहाँ पर प्राइस है $250. 250 एंड करेंसी कोड इज डॉलर. यहाँ पर जब डिस्प्ले होगा it should be $250. You have to write the code and logic. So make sure whenever you are going to automate the process, sir यहाँ पर real world में millions, trillions data will be there. So whenever you are going to write the code, so what you are going to automate it? You want to use करना automation of your data set. So this data set will come from any container, and that container can be big data, can be warehouse, anywhere. So make sure sir this data किस फॉर्मेट में आएगा? CSV और JSON फॉर्मेट. इज अ वेरी कॉमन फॉर्मेट. आप जिस पे एक ही काम किया करके बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है. नाउ
सर इस फॉर्मेट में डेटा आपको आएगा. So what exactly the requirement would be? Here is the requirement. Assume, sir, first name, assume this is Amit. And what will be the last name here? Sir Patil. And what is this email should be displayed with Amazon.com. Assume karo sir, this is the requirement. First name dot last name @Amazon.com. सर ये रिक्वायरमेंट है. जब ये रिक्वायरमेंट है, यू आर गोइंग टू ऑटोमाइज द प्रोसेस ऑफ ETL guys. यानी सर we are going to automate what is the function of ETL. This is very, you are not automizing anything, automizing the function first. Sir function 1 ETL का क्या होता है? Source count and target count must be mapped. तो यहाँ पर requirement क्या रहेगा सर? The first name is mandatory is equal to mandatory. So what does it mean? It means first name कभी blank हो ही नहीं सकता है. At any custom event, first name cannot be blank. If it is a defect. Are you getting or not? देखो गाइस रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या समझो. सर वो बोल रहा है फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी. दैट मींस एंड यूजर जब यहाँ एंट्री करेगा वो फर्स्ट नेम मैंडेटरी बोल रहा है ना सर, यानी ये कभी ब्लैंक हो ही नहीं सकता है. तो डेटाबेस में डेटा में ब्लैंक रह रहा है, दैट मींस दैट इज अ करप्ट डेटा. आर यू गेटिंग और नॉट? सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर आपका आवाज हर रोज की तरह प्रॉपर नहीं आ रहा. आ रहा है सर. आ रहा है सर. हर रोज की तरह नहीं आ रहा है? क्या इसका मीनिंग? वही सारा है. ओके गाइस थोड़ा एडजस्ट करो. देखो ओके गाइस सर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंडेटरी. इसका मीनिंग है सर, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? डेटा सेट पे ये नॉर्मल लॉजिक मस्ट satisfy this equation. Sir that means this should not be known. If it is, that is a corrupt data, remove it. So this is the first, these are the functions of ETL guys. Next, last name is mandatory. That means last name must not be known. So this is your second requirement here. Last name is mandatory. Then what it is asking, last name is equal to mandatory. Sir, what is your last name? Perfect. Next comes the first name, length is equal to 20. Assume karo guys. Sir, obviously last name will be 20. Okay. So target warehouse, target system बोलते हैं उसको, target system should be fname plus lname @amazon.com. The requirement guys. That's it. Sir, these are the requirement will come. Sir, you have to, I mean, what we are going to do here first and how? Okay guys, first of all, sir, ETL functions, so you have to my word bolna ETL functions. So what is the function here? Function is sir source system, target system count must be there. Sir, how the count will be manipulated? I will tell you one simple logic. Assume some people are using mobile phone. क्या बोलते हैं सर? Yes, cell phone. Sir, some people are using landline phone. So what customer is asking here? Some people are asking here that the people who are using both, that data must be loaded here. So what will be the count here? How the count? Count is one of the most important function guys of ETL. So इसको लिख के रखो. Sir, source target mapping, that is source and target system mapping.
इन टर्म्स ऑफ मैपिंग होता है किस हिसाब से सर काउंट is the most important functions of ETL. Next, length. Next, data types. So these are the most important functions of your ETL system, guys. Sir, mapping source and target. Yes. तो हमें यहाँ क्या मैपिंग कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम मस्ट बी रिप्रेजेंट विद दिस नंबर 1. नंबर 2 काउंट. इसका काउंट अगर 10 है इसका भी 10 होना चाहिए और इसका भी 10 ही होना चाहिए. मैं इस चीज को काउंट को और एक तरीका से समझा रहा हूँ. इट इज नॉट एज मच एज सिंपल द वे वी डू इट. समझ लो यहाँ पर है सेल, यहाँ पर है लैंडलाइन नंबर. कस्टमर बोल रहा है सर यहाँ काउंट होगा ओनली डिस्प्ले होना चाहिए द पीपल हु आर यूजिंग बोथ. सो हाउ द लॉजिक विल बी देयर. सो only cell means sir that is x plus who are using cell as well as landline number both. Yes, that is both plus y and the people who are using only landline number that is z. ये तीन पैरामीटर यहाँ होता है. That will be account assume 100. Are you getting my point or not? समझ में नहीं आ रहा है guys? Yes, sir. That means logic देखो कैसे होगा guys. ये हो गया. What customer is asking here? Sir, only cell. Blue color assume it is cell. That means what customer data wants here? वो इसी डेटा को चाहिए उसको. क्योंकि only cell and cell, try to understand business definition is very different. सर ओनली सेल और सेल में क्या डिफरेंस है? ये ओनली सेल है एंड अगर वो सेल बोल रहा है दैट इज कुछ लोगों के पास सेल है लैंडलाइन भी है तो इंटरसेक्शन एरिया इज नोन एज वाई एंड ओनली सेल क्या हो गया guys? Sir, what is exactly the meaning of the statement? Sir, only cell. So only cell means this area, guys. Perfect. इसको only cell बोलते हैं. Sir, cell means intersection area will come as cell. So, sir, both जो use करते हैं कौन सा एरिया है? This part is known as your Y. Yes. Now got it, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is your mathematics. And here Common. you are going to implement. Yes. The common area data warehouse to be loaded. How you are going to identify. So in script, you must write the variable x, y, z is equal to 10 वो बोल रहा है. That's fine. लेकिन मुझे चाहिए y value, this area. So how you are going to write the code first? Yes. Intersection. Intersection is the logic, guys. How you are going to find out that script, how you are going to write. Okay, guys. That means, sir, whenever you are going to do, you have to find out. Intersection is the mechanism you are going to use, but how you are going to write the script here. Okay. So what does it mean, sir? The script, whenever you are writing, make sure the customer requirement is the common data will be loaded in the warehouse. And this count must be, guys, mapped with here. That is why count is the most important function. अब हमारा कोड पे सर
काउंट फंक्शन क्या सेटिस्फाई कर रहा है सर, ये 10 और ये 10 और ये होना चाहिए 10 obviously. So this is source and target mapping. Second, every data in the world having two major parameter, that is length. सर ये तो 1 मिलियन ईमेल आईडी रहेगा, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ईमेल आईडी करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है? कुछ तो सर लॉजिक रहेगा. यस, million data set will be there. So you have to automate this code, guys. Within fraction of minutes, it will automate the million data. And that is the most important task you are going to deal. वो पूछेंगे तुमने automation में involve हो? बोलेगा yes sir, I have involved. ये word बोलना, I have involved in automation of ETL functions, sir, by implementing machine learning algorithms. सर ये हो गया एक. उसके बाद और भी डेटा रहेगा. समझ लो यहाँ पर सैलरी रहेगा, तो आई वांट द इंडियन सैलरी whom average package of Infosys assume. यानी सर यहाँ पर कंपनी रहेगा Infosys, सोर्स सिस्टम ये रहेगा TCS. तो यहाँ पर लोड होगा एवरेज सैलरी, एज्यूम करो, और एक डेटा रहेगा सैलरी. सैलरी में क्या रहेगा सर, किसका रहेगा एवरेज सैलरी? समझ लो 30,000. 3 लाख. सर किसका 6 लाख रहेगा, किसका 12 लाख रहेगा? सो व्हाट इज द एवरेज सैलरी? उसके बाद प्रोडक्ट समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुंबई फैशन, पुणे सर बुक्स. तो कौन सा सिटी में किस टाइप का प्रोडक्ट ले, डिपेंड्स ऑन डेटा गाइस. तो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक विल बी गिवन. यानी डेटा इतना बड़े रहेगा पैकेज, आपको सबका लॉजिक अलग अलग लिखना पड़ेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस ओनली 4 पैरामीटर. सर हाउ वी आर गोइंग टू ऑटोमाइज द प्रोसेस. तो ये वर्ड बिजनेस में बोलना है कि सर बेसिकली कलेक्ट द डेटा सेट from the warehouse in terms of CSV and JSON. So basically we have involved in automation of data set, complex data set बोल देना, complex data set with respect to business logic. I mean by implementing machine learning algorithms. So this is the most important part, one of the most important part guys of data science. क्योंकि इसीलिए पूछते हैं ये चीज को टेस्ट करने के लिए गाइस यू हैव टू फर्स्ट नो व्हाट इज द टेस्टिंग फंडामेंटल्स. वो डेटा इंटेलिजेंस क्या होता है समझना पड़ता है. सर क्या होता है? ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस दिन समझाया था इसको, अगेन आई एम रिपीटिंग कि सर लेंथ ईमेल का कैसे चेक वैलिडेट करेंगे. यहाँ पर समझ लो सर ये स्टैटिक डेटा है, डायनेमिक में अलग होगा, किसका अमेजन रहेगा किसका flipkart.com रहेगा वो अलग होगा. तो ये केस पे कैसे होगा सर? फर्स्ट एक एक करके मैप कर लेंगे. तो फर्स्ट काउंट फंक्शन सोर्स टारगेट का कितना होना चाहिए, ये 10 तो ये भी 10 होना चाहिए. सर नंबर 2 ईमेल, फर्स्ट नेम अगर बोल रहा है आपको 10 है तो फिर लास्ट नेम भी 10 है, तो फिर कैसे होगा सर? फर्स्ट नेम 10 प्लस डॉट 10 @amazon.com. So this is static data. डायनेमिक में लॉजिक अलग हो जाएगा. आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो दैट वन. सर यानी टोटल कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस डॉट इज 1. कितना हुआ? 10 10 20 21 और ये स्टैटिक 11 32. सो 32 इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लेंथ. यानी आपको लॉजिक लिखना, इफ द वेरिएबल ऑफ दिस ईमेल length is greater than less than equal to 32, it is pass, else it is a defect. कोई भी warehouse में डेटा अगर लेंथ 32 से ज्यादा जाता है it will be defect. Okay guys, सर मिनिमम कितना होगा फिर? मिनिमम इन द यूनिवर्स गाइस, कोई भी सर अगर डायनेमिक ईमेल रहेगा मीन लेंथ ऑफ एनी ईमेल विल बी 5. सर वो कहां से आ गया? माय नेम इज ए @g.com. गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं लॉजिक. हेलो, तो लॉजिक किस चीज को बोलते हैं सर? यू शुड नॉट फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द लॉजिकल वर्ल्ड.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सर हमने आज तक gmail.com देखे, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन लॉजिक सर ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कल आएगा उसका डोमेन रहेगा g.c. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। यानी वर्ल्ड में आज की बात कहीं पर भी आज से 500,000 साल बाद द मीन लेंथ किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ईमेल ये ब्लाइंडली 5 ही होगा। अगर लेंथ इसका 5 से कम है वो ईमेल आईडी है ही नहीं, सीधा डिफेक्ट यूज करना। मैक्सिमम यू आस्क टू द क्लाइंट, अगर वो बोलेगा ठीक है, नहीं बोलेगा 256। सो दिस इज नथिंग बट योर सच 256 क्यों है? स्ट्रिंग मैक्सिमम कैपेसिटी, आप लोग पढ़े हो। सो मीन लेंथ सर पूछना जरूरी नहीं है, इसको लॉजिक बोलते हैं। इसको समझ में आया नहीं आया? हेलो, आया सर बात यस सर। लेकिन ये कब आया? ये जब डायनामिक डेटा है, हमारे पास स्टैटिक डेटा है ना, तो ये फिक्स है। अगर स्टैटिक है तो फिर मैक्सिमम लेंथ नहीं, मीन लेंथ कितना होगा? सर फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, यस। सर लास्ट नेम इज मैंडेटरी, यस। सर अमेजोन इज स्टैटिक, यस। तो मीन लेंथ यहाँ कितना होगा? देखो इस डेटा के नेचर के हिसाब से वैल्यू भी चेंज हो जाता है। स्टैटिक बोल रहा है ना amazon.com, यहाँ पर जी आएगा ही नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं। तो ये लॉजिक अलग होगा इफ द ईमेल आईडी इज स्टैटिक। यानी सर 1 2 3 11 14, सो आपको वैल्यू इसके अंदर रखना पड़ेगा। इसके आगे कोई गया डिफेक्ट, पीछे आया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ओके गाइस, अभी समझ में आया? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट गाइस रुको। ओके ओके गाइस, हेलो। सो यस सर। दिस इज नथिंग बट द मीन लेंथ। सर हर चीज पे मीन मैक्स निकालना आता है, लेकिन दिस मीन मैक्स कुछ कंडीशन को मतलब एग्री करता है, वो कंडीशन आपको निकालना है। जैसे कि डेटा स्टैटिक बाय नेचर और डायनामिक बाय नेचर, उसी हिसाब से ये दोनों निकल गया तो फिर लेंथ, मैं आपको बोला था लेंथ ऑफ एनी डेटा विल बी वैलिडेटेड। सर उसके बाद विल स्टार्ट आवर कोडिंग। तो दिस इज वेरी प्लेन फंडामेंटल। सर इसको करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेंगे गाइस। चलो आप किस पे लिख रहे हो कोड लिखो, आइडियली समझ लो, हमने लिखते हैं सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। कहाँ लिखते हो, कहाँ पहचान में लिखते हो, कौन लिखते हो, वो सब स्टोरी है। ओके गाइस, तो पहले फाइल को बनाना पड़ता है। एज्यूम करो सर एक फाइल आया, वो फाइल आपके पास रहेगा यहाँ पर, जैसे कि सर यहाँ पर बनाएंगे। ओके, समझ लो सर यहाँ पर आपका कलम रहेगा, जैसे कि एफ नेम। सर उसके बाद लास्ट नेम एल नेम रहेगा, लास्ट नेम लिखो, एल नेम लिखो, जो भी लिखो लिखना है। उसके बाद समझ लो ईमेल रहेगा, सर ईमेल। ओके, उसके बाद सैलरी रहेगा। तो ये चार डेटा सेट इस तरीका से रहेगा गाइस। जैसे 10 किलोमीटर रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यू जस्ट नो द फंडामेंटल्स। सर ये होने के बाद डेटा विल बी देयर। व्हाट इज you are observing here, this is the column in the world guys। कोई भी चीज, the concept
इज एब्सोल्युटली सेम, उसको घुमा फिरा के वो रिप्रेजेंटेशन होता है. इसको ऑब्जर्व करो. व्हाट इट इज? कॉलम. एंड व्हाट विल बी द हियर? सर वैल्यू. यस, अमित. एंड दिस इज पाटिल. अज्यूम करो. सर यहाँ पर क्या रहेगा फिर? यहाँ यहाँ क्या रहेगा? पावर. सर यहाँ ईमेल आईडी क्रिएट होगा. यू हैव टू राइट द कोड टू क्रिएट इट. एंड सैलरी समझ लो 10 लाख है, 20 लाख है. इस तरीके से चलेगा गाइस. परफेक्ट. तो ये डेटा इतना तो नहीं रहेगा ना सर. रियल वर्ल्ड में ऐसे रहेगा और ये रियल वर्ल्ड में ऐसे रहेगा. ये ऐसे रहेगा. ओके. सो लॉजिक. अब You are आवाज not नहीं आ रही. audible, sir. सर आवाज नहीं आ रहा. Hello. Sir, you are not audible. Sir, you are on mute. Sir, you are on mute, sir. हेलो हेलो. Yes, sir. इज फाइन नाउ. Yes, Yes, sir. yes, sir. आप लोग कुछ गलती से क्लिक कर देते हो गाइस, मेरे को लग रहा है. हाँ मुझे लग रहा है सर किसी ने तो म्यूट किया था शायद. यस. ठीक है गाइस, थोड़ा रात में गुस्सा कम करो. पुराने के बाद जितना गुस्सा चुकाना है चुका सकते हो. Oh, yes. Okay. So, okay, guys, let's start. So, what exactly is the definition here? Here's the intro question they are going to ask you. I have to find out the average salary. The requirement. So, how you are going to judge which library you are going to use? This is the very first question. Hello. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. How you are going to find out, you choose which library I should use? This is the simple question. They are not going to ask you NumPy, what is Panda. They are going to ask you how I am going to choose which library I must use. लिखो question guys. लिखो, sir, with respect to the nature of the data, we are going to judge what type of library we should use. अरे भाई 3000 libraries है, अब बताओ कौन सी library में use करूँ इस पे. वो पूछ रहा है average salary. Are you getting my point? Hello. That Yes, sir. means ये एक जजमेंट है. तुम अभी सीख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है सर नंपा यूज कर लेंगे, पेंडा यूज करेंगे, लेकिन वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम जज कैसे करोगे. आंसर इज विथ रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द डेटा सर. अगर ये सैलरी रहेगा कि 20 lakhs. Are you getting my point? Getting or not?
मतलब सर कैरेक्टर पे फॉर्म में डेटा Yes, रहेगा sir. और प्रोडक्ट टाइप्स, कौन से प्रोडक्ट टाइप एंड यूजर चुन रहे, तुम वहां नंपाई यूज कर सकते हो क्या? गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन. Then who is going to determine which library you are going to use? Are you getting or not? Is your project manager who is going to judge? No, sir. Are you It's the getting my nature of the data. Yes, sir. nature of the data? अगर statistical analysis है, sir, Python 20, how many people are placed? How many people are still searching job? That is statistical analysis. In this case, which library should be used? Yes. Sir, if it is numerical analysis, obviously, sir, I am going to use NumPy. Are you getting? So, एक tricky question पूछते हैं. You must ready, guys. चलो, sir. We are going to. I think you people are expert with this. As आप लोग coding रोज practice कर रहे हो. If I did any mistake, rectify me. Okay, guys. Sir, this is your import NumPy as NP. आप लोग इसको रट्टा मार से दो. You are everyday practicing. चलो, sir. Where I am trying to pulling the data, this is in terms of CSV format. Perfect. So I must write the library is called as import. So if it is CSV, if it is CSV, you are going to write CSV. If it is JSON, you are going to write it as JSON. So make sure यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि how you are going to getting my point or not. अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया, नाउ यूर देखो हर टेक्नोलॉजी का आप इंडिविजुअल पढ़ लिया. बिजनेस में गाइज ऐसे नहीं होता है, वो सब टेक्नोलॉजी को एक ही जगह डाला जाता है. दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ योर टेक्नोलॉजी. सर आप एक क्लास किए फाइल हैंडलिंग, एक ने लिस्ट टॉपल, सर लैम्बडा, तो उसको जब मिला जाएगा ना, द ब्यूटीफुल थिंग्स विल कम. जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको अलग अलग आप पढ़ लिए. हाइड्रोजन डिस्ट्रक्शन है फ्यूजन सिस्टम, ऑक्सीजन सर इज कंस्ट्रक्टर, लेकिन दोनों को मिला दिया तो फिर हो गया बिजनेस, दैट इज वाटर. तो बिजनेस का मीनिंग है इंटीग्रेशन का. सर यहाँ सब कुछ एडेड रहेगा, सच दैट आपको पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. सर फाइल हैंडलिंग, अभी मैं CSV इंपोर्ट करूं, जेसन रहेगा, जेसन इंपोर्ट करूं. सर इन दिस केस आप कैसे डेटा को लेके आओगे चैम्बर को, फाइचार्मो आइडियली जो भी है गाइस, फंडामेंटली सर डेटा को मेरे को दूसरा सिस्टम से अंदर लाना है. डेटा लाऊंगा नहीं तो फिर मैं क्या एनालिसिस करूं? File handling you are going to use. So I think you people are expert with file handling. So open, okay, you are going to write the file path. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Where the file exists? Perfect, guys. So where does the file exist here? इसको close ही कर देते हैं. Guys, फाइल किधर रह गया? एक मिनट. Right click, properties, here copy. Copy paste is the most powerful things in the business, guys. But तरीका अच्छा होना चाहिए. Okay, guys. So control. So you are representing this path. I am going to pulling the data. Sir, उसके बाद you are going to, what is the file path name? That also you have to copy, guys. वो छोड़ दिया हमने. Perfect. So this is which format it is? CSV. Getting my point or not? Come on. So which mode you are writing? Here the intro question they are going to ask you. What are the possibilities mode of file handling? How to deal? Is a very important question. File handling अच्छी तरह पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीज रहता है. तो रीड मोड में यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. उसके बाद
सर यू आर गोइंग टू एक एलएस डिक्लेयर कर दो, एच समझ लो उसका नाम दे दो फाइल, FIL। चलो गाइस, सर ये हो गया योर फाइल। सर उसके बाद यू आर गोइंग टू, यहाँ पर फंक्शन यूज होता है। सर व्हाट एग्जैक्टली द लॉजिक हियर व्हेन द डेटा विल बी पुल्ड फ्रॉम द सिस्टम। दो चीज सारे हर फाइल के अंदर रहता है, ऑब्जर्व करो। यहाँ पर रहेगा नेम, यहाँ पर रहेगा नेम। सर इस दोनों में अंतर क्या है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वैल्यू। सर कोई भी फाइल पे रहे वही चीज रहेगा, तो दो चीज रहता है, यहाँ रहेगा प्राइस, यहाँ रहेगा प्राइस का वैल्यू। ब्रह्मांड में यही दो चीज रहेगा, यानी सर यानी वन इज ऑब्जेक्ट, एक रहेगा वैल्यू। अगर ये जेसन फॉर्मेट में होगा हम इसको बोलते हैं की, एंड दिस इज वैल्यू। इसी का नाम दे दिया गया डिक्शनरी। अगर ये रहेगा लिस्ट में, ये हो गया वेरिएबल लिस्ट नेम, यहाँ रहेगा अमित, यहाँ रहेगा नेहा। लेकिन रह क्या रहा है? सर यही दो वैल्यू रह रहा है। अगर XML फाइल पे भेजे, ये गया प्राइस, उसके बाद ये रह गया वैल्यू। यानी सर दोनों चीज तो रह रहा है, किस तरीका से रह रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग। होल कंसेप्ट ये दोनों चीज पे रह रहा है, एक को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक को वैल्यू होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? हेलो, सो समझ में आया है ना गाइस? सर यानी ये Yes. दोनों को तरीका अलग है, हम उसको अलग अलग तरीका करके पढ़ रहे हैं। ये दोनों तो सेम है। वही चीज मैं उस दिन बोल रहा था, कुछ अलग पढ़ रहे हैं क्या? लिस्ट टपल में कुछ नहीं है, तरीका अलग है, लेकिन दोनों चीज ही हर जगह रहता है। तो यहाँ पर जब डेटा रहता है गाइस, इस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं एंड इस चीज को वैल्यूज बोलते हैं। अब इस चीज को जब पुल होगा तो फर्स्ट कॉलम को उन्होंने जीरो करके रीड करता है। मतलब मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है? मेरे को सेकंड रो से ही पढ़ना है। ये इंट्रो क्वेश्चन गाइस, मैं थोड़ा आता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा 2 सेकंड रुको लाइन पे। हेलो गाइस, हेलो। यस सर। यस सर। सो मेक श्योर, यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट फंक्शन यू आर गोइंग टू यूज व्हेन यू पुल द डेटा फॉर CSV एंड JSON। किसी में भी फाइल रहे, याद रखो ऑब्जेक्ट को जब रीड करेगा, फर्स्ट वैल्यू को ऑब्जेक्ट रीड करना चाहिए। अगर फर्स्ट चीज को वैल्यू करके रीड कर लिया तो फिर खत्म हो गया, वो गलत एरर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है कि which function you are going to use to upload the data of JSON। तो कल JSON.load यूज होता है, उसको नोट करके लिखो CSV में
वो फंक्शन का नाम रहेगा CSV डॉट डिक्ट रीडर। लिखो गाइस, सर उसको मैं एक वेरिएबल पे रख दिया, समझ लो CSV अंडरस्कोर फाइल। ये वेरिएबल इसी के अंदर रखूंगा। सर किसको रखूंगा? जो डेटा को मैं से CSV डॉट डिक्ट रीडर। सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो सर, CSV डॉट रीडर नहीं है, CSV डॉट डिक्ट रीडर। and what are the file name we have mentioned here? File. Okay guys, हेलो, इतना तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes. In function is a very very important question. Dict reader means it will consider the dictionary reader, and dictionary suggests the first row it will consider as the object. समझ में आ रहा है guys? यानी जो भी वैल्यू रहेगा उसी को पहले पढ़ेगा सर। यानी काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? डेटा रीड करना सेकंड रो से स्टार्ट करेगा। ये फंक्शन का यही मीनिंग। इसी को क्वेश्चन लिख लो सर, जेसन रहेगा तो ये फंक्शन क्या यूज होगा। फंडामेंटली सेम थ्रू आउट वर्ल्ड गाइस, सेम। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया? सर उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट। अब वैल्यू कहाँ पर है? फर्स्ट नेम के अंदर है। फर्स्ट नेम के अंदर डाटा है। सर फर्स्ट नेम के अंदर जब डाटा है तो वेरिएबल का नाम क्या दोगे? फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अंदर सर हमने क्या करेंगे? लिस्ट के अंदर डाटा घुसना चाहिए। Hello, sir. No audio again. Hello, sir. Sir, you are not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद नेट इशू हुआ होगा, कर्सर वहीं पे है। सर ने लीव कर दिया क्या? एक काउंट कम हुआ। Yes, yes. Sir left the meeting, I guess. Maybe join. सर रिजाइन कर रहे शायद। Yes, yes.
सर ने नया लिंक भेजा है ग्रुप पे, काइंडली प्लीज चेक। हाँ